First of all, let us see what is the topic for today. Discussion on RERA certificate in form and management of funds under RERA by the promoters. If you look at the key part are covered today. For the whole of the project, if promoter is collecting money from the LOTs, then how they are going to maintain that fund, how they are going to withdraw that fund, what are the conditions or restrictions, what are the rules, provisions under Act, rules, regulations, circulars, orders to be complied with. Because we are professional and it's our responsibility to comply with RERA provisions. More and more we will be practically acquainted with how things can be taken care. It will be useful for promoter. And one promoter can suggest your name to others. आपको business लाने के लिए फिर efforts की जरूरत नहीं. And that is why today's topic is discussion on these two aspects. So before we begin, I will suggest everyone, whomsoever, new or old, or are facing challenge or having solution, first of all, let us have what kind of things we think about in Form 3 we are facing as a challenge. Format is there. We don't want to discuss the format. Everyone must be knowing or may see the format. What are the things in the Form 3? Basic structure I can tell you. In Form 3, this is consisting of 7 tables. Table A, Table B, C, D, E, F, G. This is last. A belongs to estimation. Under A and B, there is no difference. Only difference is any cost incurred in under the particular heads are coming in Table B. This is the for new one. Everyone who are not old one in practice. But even old one may refine their knowledge and be confident whenever you are having the RERA practice. RERA practice begins from the CA perspective from Form 3. There is nothing other than Form 3, there is nothing for you to practice, I can say. यदि आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो भी फॉर्म पहले 3 लगता है. 1, 2, 3, whomsoever is the professional, वो फॉर्म लगता है. And there are a lot of other things for registration of a project. तो it means, जैसे बोलते हैं ना, लर्नर्स प्रोग्राम में फॉर्म 3 है. And at the end also it is required. Even for project complete भी हो गया, you will not be counted as complete until you comply with submission of Form 3 and the last Form OC with Form 4. तब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं गिना जाएगा. कंप्लीट होने के thereafter you can close your RERA designate account and withdraw all the money as a promoter. You can suggest that. So it means Form 3 is the key aspect, very important document. If you look at Form 3 is given Form 3, it is not Form 1. नहीं तो ऐसा भी हो सकता था ना, 1 इसको करता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होता आर्किटेक्ट इंजीनियर का, वो नहीं किया. इनको Form 3 को ऊपर सबसे लास्ट में रखा, because architect has to give the certificate in Form 1 first, and then engineer has to give in Form 2. Engineer is also giving cost incurred in the project. सबसे पहला उनका एस्टिमेटेड है, वो फ्रीज होता है. When you are registering your project, you are submitting estimated project cost. Project cost consists broadly in 2 categories. One is the land cost, other is development cost. And the whole project is covered under this 2 broader cost structure. Now, if you look
From the land perspective, in the beginning, I have shared something about land or redevelopment projects. There are various kind of projects wherein different kind of cost is incurred. All as a cost, you can say project cost. But when you begin to look at what cost can be considered as a land cost, कंस्ट्रक्शन का कोई भी खर्चा हमारे लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. बट ब्रॉडली इट इज vague, is very vague. When we are in the RERA practice, we have to be specific. Consider SRA project का जब भी रिहैब बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं और लैंड के कॉस्ट आप देखते हो, तो लैंड तो आपको लगभग फ्री में मिलता है until there is a owner of the land encroached by slum dwellers, and then हो सकता है 100 करोड़ का चीज 5 करोड़ में मिल जाए, बट 5 करोड़ के साथ में कुछ एडेड या सम लायबिलिटी भी मिलता है, बिकॉज एज पर द स्लम एक्ट जो भी स्लम डवेलर्स है उनको कुछ बना के आपको कमिट करना है, देना है. इट मीन्स वो 5 करोड़ लैंड कॉस्ट नहीं हो गया, लैंड इज costing with the cost which are attached with the construction. Therefore, under RERA, all those things are very systematically, scientifically designed to take care of every aspect of construction. And broadly, they have segregated in two parts. First is land cost. If you are having the free land, then there is no other obligation. In the land cost, if you look at, ये ओपन करिए तो इसमें जो फॉर्म 3 है ना, इसके अंदर इनको दिखा सकते हैं. तो if you look at the land cost, ASR value of the land, it begins from there, and thereafter in Mumbai kind of place you will see एक एग्जांपल 1000 मीटर का प्लॉट है, यानी एक एग्जांपल 10,000 स्क्वायर फीट का आपको है, तो 1 FSI समझो उतना हो सकता है. ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको 2 FSI 7-8 FSI डिपेंडिंग ऑन वेरियस प्लानिंग अथॉरिटीज के जो DCPR के जो प्रोविजंस है, रोड का विड्थ क्या है वगैरह वगैरह, आर्किटेक्ट का काम. तो दोज डिफरेंट प्लॉट्स आर गेटिंग डिफरेंट FSI, मींस उतना अधिक कंस्ट्रक्शन 10 की जगह पे 20 भी हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है. दैट इज व्हाई हाई राइज टावर्स आर हियर कंस्ट्रक्टेड. तो सवाल है कि इज इट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट? यदि बिल्डिंग आप शुरू भी नहीं करो और फुल FSI लोड करके आप लेके परमिशन लाना चाहते हो, देन यू हैव टू पे द फुल प्रीमियम और TDR कॉस्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. दैट मींस logically if you look at, these parts are part of the land. Clear? It's not only 5 crore SRA का, or if it is open plot unencroached and there is no other obligations, उसकी फॉर्म 3 नहीं है कर जाने. हाँ, तो इस पे डाउनलोड करके होगा तो we can just have look कि क्या है वो A to G, what are the really form is. And then if you see the cost aspect, if the plot is vacant and we are getting suppose 3 FSI or 4 FSI, so then obviously those are not free. It is not just like you go and construct. Government is making money out of it. They are giving additional FSI by way of TDR, further FSI by of fungible premium, by of some other premium. There are, if road width is more, you can have one more FSI by paying so and so to the government. So whatever those premiums are being paid are covered in this land cost. Different heads, subheads are given, and inside of that you will have some more heads wherein the rehab constructions are there. Redevelopment, redevelopment of the construction when it happens. तो उस केस में कैसा होता है, there are buildings which are demolished and then they are paid rent, they are paid some brokerage, they are paid some corpus. So these are the why I'm sharing all those basic things. It will make you clear about why and how Form 3 can be prepared. आप जो कुछ भी सुन रहे हो उसमें एक चीज
जो नहीं सुनते हैं हमारे प्रोफेशनल साथी और भाई और हमारे फ्रेटर्निटी वाले, वो है फीस नहीं सुनते, वो खराब करते। क्या होता है, आप 56 भोग बना के मक्खी मार के कीड़ा जो है मकड़े का उसको उसमें डाल दो, तो 56 भोग खाने लायक बचता है या स्पॉइल हो गया? कुछ तो बताओ, इसमें कोई डाउट थोड़ी है, रेरा का क्वेश्चन तो नहीं है। खाने लायक बचा वो 56 भोग। तो क्या हो रहा है कि जब मालूम है कि अपॉर्चुनिटी जितनी है, तो जो नए होते हैं ना, हम बोलते हैं नए को भी लेके आओ इधर, उनको इतना बढ़िया बना दो जो खुद मन भर के कमाई करे और अच्छी क्वालिटी का सर्विस प्रदान करे। होता ये है कि जो 2-4-5 हजार के चक्कर में वो साइन देखते कि कुछ काम नहीं, फॉर्मेट एकदम फिक्स है, फिगर बदलने से हमारा साइन करने से 5,000 मिलता है, 10,000 मिलता है, तो क्यों ना करे। लोग किसके ऊपर अभी नहीं, मेरा फोकस उस पे है बहुत, बिकॉज पूरा कई साल निकल गया उसको, बीच बीच में मैं राइट टाइम पे एम्फेसाइज करता हूँ, सो दैट एवरीवन शुड गेट इट। नाउ इफ इन द मार्केट विच रियल एस्टेट all of Maharashtra around 40-45,000, 48,000, 49,000 प्रोजेक्ट्स है, उसमें 15-17 हजार तो कंप्लीट हो गए, तो 35,000 मान लो है प्रोजेक्ट। उस 35,000 प्रोजेक्ट्स में तो 44,000 प्रोफेशनल हम काम कर रहे हैं ना, और एक एक प्रोफेशनल को 15-20-100 प्रोजेक्ट्स भी है, किसी के पास एक दो ही हो सकते। लेकिन मेरा यहाँ पे सजेशन ये है कि जब हम आपस में यदि किसी चीज की कीमत गिरा देते हैं, तो पहले तो हम अपनी कीमत गिराते हैं जब हम करते हैं। तो मेंटेन करो, 2 साल कोई पैसा नहीं आएगा, चलने दो, बट मेंटेन योर क्वालिटी ऑफ नॉलेज। टेक नॉलेज फ्रॉम दिस ग्रुप, मेक दिस ग्रुप रिच, एंड आउट ऑफ दैट यदि 10 काम की जगह एक काम आपको फुलफिल करता है, तो यू डिजर्व टू गेट इट। आज एक एक एम्प्लॉय को रखते हैं, बीकॉम वाले को भी, तो 25-50 हजार कब जाता मालूम नहीं चलता है, एंड उसको थोड़ा और बेटर देने वाले मिले तो आप उतना देखे भी वो भाग जाते। तो आई मीन टू से कॉस्ट ऑफ लिविंग इज वेरी हाई फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो टेक अ रीजनेबल अमाउंट एंड सस्टेन योरसेल्फ फर्स्ट, डोंट गो फॉर जस्ट ग्रैबिंग बिकॉज ऑफ योर फीस। ना करने की भी आदत होनी चाहिए। तो ना क्वेश्चन ऑफ, उसको बड़ा करेंगे क्या फोन? अच्छा ठीक है, इसको बड़ा तो 100% अपन 20% यहाँ, कर दीजिए। ओके दैट्स इट, राइट। तो ये जो अभी आप देख रहे हो ना, दिस इज द फॉर्म 3 beginning from there. I am not going through the headings, certificate, financial, this and that, वो name and period, quarter, वो सब डालना चाहिए आपको। And this table A estimated, table A and B replica, only thing the right column where estimated cost, वहाँ पे incurred cost लिखना रहता है। Every quarter we have to submit form along with form 1 and 2, इंजीनियर आर्किटेक्ट के दोनों के फिगर के बाद। फॉर्म 3 का इंपॉर्टेंस इसीलिए ज्यादा है कि आपके इस फॉर्म में एक कॉलम है जहां की इंजीनियर का कॉस्ट कितना है वो भी लिखना रहता है। आई शॉक टू सी सम ऑफ दी फॉर्म्स जहां इंजीनियर कॉस्ट 0 लिखा रहता है, लेकिन सीए का फॉर्म में 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, और वो विड्रॉबल लिमिट में बता देते हैं, whichever is less. So this is one of the gray area for those who are new. Please note this. You cannot take whatever टेबल बी में। हाँ, वो आएंगे ना, आएंगे उधर भी। हम जस्ट पॉइंटिंग आउट कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो इंजीनियर का है, दिस इज फॉर्म 2 वी आर टेकिंग एंड राइटिंग इन फॉर्म 3 कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट of engineer and book the accounts, whichever is low, third we have to take up. Let us go in the form B. हाँ, something to add. हाँ, yes sir, बोलिए। TDR जो FSI है, हम लोग हर एक एरिया में अलग अलग डिफाइंड है। Like for some agreements, FSI itself is written in the agreement. So FSI attached to land, मतलब वसई विरार में agreements होते हैं directly FSI attached to land. So every area will have a different meaning of the different set of words. So we will have to make sure कि we read the agreement properly. FSI का है या TDR agreement है,
TDR है तो TDR परचेज का equivalent का how we will have to evaluate for form 0. तो वैसे हर एक के लिए हम लोग को अलग-अलग वर्ड्स रहेंगे, हर एक म्युनिसिपैलिटी में अलग-अलग टर्मिनोलॉजी रहेगी. So we will have to check it while issuing form 3. Development rights. हाँ, development rights. Basically, second thing in this case is that wherever the premiums have been paid, most of the common things happen is that the premiums for the payment to the corporations. What happened? There are two type of payment. One is the payment for an area purpose, that is built up area development get increased, and another is that whatever area which is being approved for the construction of area or development of that area, you pay the cost. So in this case, there is a bifurcation between them. The whatever cost which you will pay, by which the development of built up area increases, which is called FSI or premium or whatever thing, will come in land cost, and rest comes into the cost of construction. That is the key areas which one has to pay. And second thing, as per the land also, it's on an ASR value. But if you look fine print of the rules, as per rules or regulation, I'll send it in that way. ASR value is to be used for declaring the proportion. So nowhere it is being said that the cost has to be incurred, cost has to be taken or not. However, the form 3 is designed to just to put ASR, and form 3 is just a annexure to a regulation. Whereas Act says of land cost, rule says of land cost, and in rule or regulation, it says the ASR value needs to be used for the purpose of proportion, determining the proportion. So by itself, the Act and rules and notification for regulation accepts that these are two different things. For the purpose of cost incurred, it should be actual. For the purpose of withdrawal, it should be different. So that is a thin line of distinction. So how you manage it, it's up to you. Please, sir. So, say my question on this is: suppose your cost of acquisition of land is 5 crore, but ready reckoner value may be 2 crore or maybe 10 crore. You take this example. Here, RERA form 3 says to take ASR value. Yep. So which value one should take? See, I will disclose the RERA ASR value, but with that, I will disclose in the note that actually cost incurred. So for calculation, it is ASR. For calculation of percentage of proportion, it's ASR. For the withdrawal, it's an actual. टेबल में नहीं है ना? फॉर्म में ही suppose ASR is 2 crores, actual cost is 10 crores. So when it comes to withdrawal capacity, it will be decided by the ASR, because calculation में at the bottom of the form what will come? It is the 2 crores ही आएगा. Cost में 10 crores तो नहीं आएगा. Cost में 2 करोड़ ही आएगा. बराबर आपने बोला. Cost के अंदर 2 करोड़ आते हैं disclosure for ASR value. हाँ, लेकिन cost incurred कितना है? 10 crore 8 crore. Cost incurred कितना है? 10 crore. So do you mean to say the intent of the act is that you should not withdraw whatever cost you have paid? हाँ, तो आप. Is that the intent of the act? Yeah, but banker what they will understand? They will understand the. Practically, that's what I'm trying to say is that when you make a percentage proportion, at that time there is a table which you will put a disclosure. Yeah, in that put the. हाँ तो उधर आप calculation बता सकते हैं. मेरा ये कहने का. By giving reference to, I will just give you the reference. Okay, right? एक minute. I will just give you a reference. First of all, you read Rule 5. नेशनलाइज बैंक रहा तो समझेगा ही नहीं. Explanation. 1 second. Rule 5. Explanation 1. Have you got the WhatsApp? In the Let's group. check that. Rule 5. Explanation 1. Read it and then understand what you understand. It's on second page. Which rule? Rule 5. Explanation 1. Second page, fourth para. Ascertaining the cost of completion of.
So why ASR needs to be used? Concern. For ascertaining the cost of completion of the project. So as a professional, is a content of the form above rules or act and rules are above the content of the form? Explanation. My question is very simple. वो तो सर बरोबर है लेकिन बैंक वाले को कौन समझाएगा? हाँ? तो हम लोग टेक्निकली सब डिस्कशन करेंगे हाँ। वो तो सीधा फॉर्म भी नहीं समझते तो एक जो नोट्स में डालेंगे नहीं तो बैंक वाले को मतलब आप क्या चीज में आपको समझाना है मुझे वो मेरे बताइए। पास समझो 50 क्लाइंट है हाँ। बरोबर तो सब बैंक वालों को मैं जाके समझाऊंगा कि मेरा 8 करोड़ रुपया नोट में लिखा है वो नहीं आपका विड्रॉल लिमिट विड्रॉल में आएगा ना विड्रॉल में अमाउंट ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड टेबल में तो हमें 2 करोड़ ही आएगा ना टेबल में 2 करोड़ आया। हाँ आप उसका जब आपका एक्चुअल कॉस्ट आएगा ओके एक्चुअल कॉस्ट तभी आप रफर नोट दिखाएंगे। नोट के अंदर आप लिखेंगे कि 2 करोड़ और 10 करोड़ लेट्स आई विल गिव यू अ वेरी ये सिंपल सर ये सर 10 करोड़ है तो एक्चुअल कॉस्ट जब दिखेगा कॉस्ट इनकर्ड मैं उसके नीचे नोट लिखूंगा और नोट को रेफरेंस दूंगा ऊपर इतना दिख रहा है लेट्स से कि इन दिस 2 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ हुआ था खर्चा लेट्स से लेकिन एक्चुअली कितना हुआ है 8 करोड़ और 12 करोड़ खर्चा हुआ है तो मैं उधर दिखाऊंगा कि द एक्चुअल कॉस्ट इज 12 करोड़ एंड परसेंटेज ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द 12 करोड़ विल कम एज अ परसेंटेज that is only for ascertaining percentage what I am supposed to withdraw percentage of the cost incurred further to that I will just give you the thing okay right if you go to your this what do you say one second third page you will go to regulation 4 third page explanation 1 no sorry not explanation sorry I not regulation 4 one second one second नहीं sorry नहीं एक मिनट इसके अंदर और एक चीज है one second हाँ सॉरी उसके ऊपर ही थर्ड प्रोविजन में चाहिए रूल 5 का थर्ड प्रोविजन में third explanation so we are the one who certify what is the proportion as a chartered accountant so for that there is a system which has been given based on that the certification needs to be done and why we are discussing about this as sir rightly said we are not here to see the formats we are here to discuss and which are the key areas and is a key area and there is a wide difference between ASR value and actual cost so how do we bridge the forms as well as the act and rules right sir Absolutely. One thing which he said is very correct. Everyone understand only Form 3 withdrawal amount is how much they have mentioned it in the certificate. Bank is concerned with that figure. They don't see even whatever is table G, what notes they have given and what is the impact of it. If it is going against the builder and bank is very active to take some actions, then obviously they will take those things. If it is going in favor of the promoter, they may not count it for withdrawal purpose because they are also giving now certificate to RERA authority stating that they are going to observe whatever is there in circular 56 for the management of the fund of the account. So in complicated cases or where such things Bhaveshji has explained, these are the intricacies and mastery of such things. He is having mastery on because in years or decades he is practicing into real estate and he has been heading for a real estate of a big promoter. So he is having that depth of knowledge. But such kind of expertise might be required in few cases, may not be required in every case. Right? Most of the cases, ASR value and market value, whatever purchase value, but nobody purchase nowadays land. But maybe in 1,000 case, one may be buying land and then constructing. And buying rate is obviously high. But if ratio is there, then again it may be market value may be equivalent to the ASR value mostly because people nowadays there are many professional promoters they don't want to go for cash transactions and in those cases
ASR value is much less than actual value. Then what? Challenge, every time challenge of different nature will come as a professional. They may ask you कि कौन सा वैल्यू लेना है. यदि हम प्रोटोकॉल देखेंगे तो लगेगा कि ASR वैल्यू लेना है. But if you take whatever actual cost incurred, then put note in the table G. Adverse, reverse कर देते. ये क्यों इंटेंशन क्या था रेरा का कि जो हिस्टोरिकली मैंने लैंड ली है उसकी वैल्यू पता नहीं है. करोड़ रुपया है. करो आज. डेट में मेरी वो लैंड की वैल्यू है 100 करोड़. तो मेरा वो जो विड्रॉल कैपेसिटी है वो मेरा विड्रॉल प्रमोटर का विड्रॉल कैपेसिटी ही नहीं बनता. Your answer is under your answer is under circular number 7/2017. मैं First टेक्निकली ये तो लैंड का जो आप कह रहे हो ना, हाँ, ये चीज को उधर दिखाया गया है. और मेरी कोई पर्सनल बात करूं, हाँ, नासिक में हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं. हाँ, तो वहाँ पे ASR वैल्यू सपोज 2 करोड़ रुपया है और लैंड 10 करोड़ का 10 रहेगा. करोड़ में लिया. या 101. तो मेरा 8 करोड़ तो ब्लॉक हो गया. हाँ, तो मैं वही सब तो याद डालूंगा. वही ब्लॉक और वो ICICI बैंक वाला समझता ही नहीं है. नहीं है, वही ब्लॉक करने के लिए. डिफिकल्टी. हाँ, तो मैं वही ब्लॉक को किस तरीके से निकाल सकते हो. These are the key pain points. वो उसका मैं आपको बताया. मैं बॉम्बे बैठा हूँ, हाँ, मेरा प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है. हाँ, तो हर बार तो मैं ब्रांच नहीं see, ICICI बैंक रहे कि कोई भी बैंक रहे, मैं भी सर्टिफिकेट देता हूँ. काफी लोग का. अच्छा, मैं एक लोग सजेशन question या मैं एक withdraw. सजेशन दे रहा हूँ. Point noted. हाँ. We all captured your concern and his answer. But इसको आगे बढ़ते, क्योंकि रेरा में there are lots of such anomalies. वहाँ की clear cut answer है नहीं. Or we have to live with, right? There is no solution. Time will come, then there can be some clarification. And whenever we are हाँ. writing value of land as zero in the case of redevelopment projects or somewhere, so we have to make sure we have to put a remark in the table G, or the RERA may raise a query why we have put it land cost as nil. So it is always advisable that we have to put in remark if we are not putting any cost to cost of value of land whenever we are issuing form. So make sure we put remarks for whatever we are not putting. And similarly, if we are giving ASR value, बेसिक FSI की वैल्यू लैंड कॉस्ट में डालना आपने. नहीं, बाकी क्या होता है, जैसा लैंड कॉस्ट का जैसा सर आगे लेके जाएंगे, सेकंड पॉइंट जो आएगा FSI प्रीमियम का. अभी क्या होता है, बहुत टाइम क्या होता है, प्रीमियम दे दिया BMC को, TMC को, या अब नासिक के अंदर म्युनिसिपैलिटी को, जिधर प्रीमियम दे दिया तो इधर डाल दिया, या कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का एक कॉलम में डाल दिया. बाइफर्केशन होना चाहिए उसका कि whichever fees, cess or whatever you are giving is increasing my built up area. FSI premium, end of the day, FSI premium or whatever other premium or open space deficiencies or all these things which you are giving is actually increasing your premium area for development. That should be the land cost. And the other thing which you are paying, which is for execution of this area. बेसिक मेरा जो सेल्फ कंटेंट FSI है वो मेरा, यानी वो सपोज वो लैंड मेरा 5000 स्क्वायर मीटर है. हाँ, तो 1.1 उसका मिला देगा तो 5,500 1.1 तो आ गया. प्लस उस पे अगर 40% मिलेगा, लेट्स से मैं आपका एग्जांपल 2200 और मिलेगा, तो हाँ, तो फंजिबल FSI तो वो सब लैंड में जाएगा. ओके, वो लैंड कॉस्ट में जाएगा. और फिर वो डेवलप करने के लिए लेट्स से कि आपने CFO को पैसा दिया, HRC को पैसा दिया, एनवायरनमेंट को पैसा दिया, स्टेयरकेस प्रीमियम फलाना ढिकला जो भी प्रीमियम रहेगा वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में जाएगा. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर जाएगा. ओके, FSI में नहीं आएगा. वो FSI ही नहीं ना, है क्या वो पेमेंट. ये लॉजिक जानना बहुत जरूरी है. जो भावेश जी ने बताया, दैट इज द लॉजिक. दे हैव गिवन द प्रीमियम इन लैंड एज वेल एज इन डेवलपमेंट कॉस्ट. तो पीपल आर कंफ्यूज. जब उनको मान लो हुआ कि 10 करोड़ रुपया पेमेंट किया, तो उनकी चॉइस पर उन्होंने कंस्ट्रक्शन वाले में डाला. जबकि सपोज करो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में 10 करोड़ प्रीमियम भरा है, तो ऑब्वियस है कॉमन सेंस लगाएंगे तो वो लैंड कंस्ट्रक्शन को परमिट करने के लिए पेमेंट किया होगा. यदि वो 25,000 या 2 लाख रुपया पे किया तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ प्रीमियम इज पेड, like staircases premium or some other kind of thing. Those will come under the construction part of premiums, and this is also key part of group discussion. So now, sir, and Kunal, you said something about redevelopment. What should be the right approach for joint development? What cost of land should we enter there? Landowners cost.
Landowners cost. Landowners cost. And separate certificates for landowner No, and developer. There is no, as such, there is no such clarification given by the RERA authorities. So basically, a single Form 3 is issued for a single project. This is what I am using for all the projects of my joint development as such. But then, They're operating separate accounts then? Yes. Yeah. See, Okay. They basically, are giving separate, those tables are separately made for Yes. each account. Yes. basically, in the case of multiple promoters, all the promoters have an obligation and they file the Form B and all that things. In multiple promoters, every promoter has to go through all these things, which is including Form 3 also. However, in most of the cases of JDA, which I have come across, is that nobody is doing the landowner's obligations. Now, in this case, what happens is that in JDA का land का खर्चा है वो निकल जाता है. आप ना cost income में लेते हो ना कुछ आगे करते हो. वो सब चीज को आपको इनफैक्ट ऑर्डर 56 2024 जो आया है उसको ये तो आपको कंपलसरी करना पड़ेगा. अर्लियर भी वो जरूरी था. तो whenever there is a form 3 or a requirement is concerned, it will be number of promoters plus 1. Number of promoters will be the independent individual this thing, and all clubbed together will be the form 3 which will go on the website. टेक्निकली हमको ऐसे ही करना चाहिए कि वो लैंड ओनर से लेना चाहिए और फिर उसको कंबाइन करके हमको बना के उसको अपलोड करना चाहिए. दैट इज द करेक्ट अप्रोच. अप्रोच प्रैक्टिकली वैसे ही हो रहा है. प्रैक्टिकली बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी कर रहे, ऐसा नहीं है. अभी लैंड ओनर गांव खेड़े वाला लैंड ओनर है जहाँ पे एक भाई है, उसके और 4 भाई है, बहन है, सबका पीआर कार्ड पे नाम है, सब डीए में है, तो सब को प्रमोटर ऑन द वेबसाइट है. सबको शेयर्स दिया है कि भाई तेरे को 4 घर मिलेगा, 6 घर एरिया मिलेगा. तो प्रैक्टिकली उनसे वो सब चीजें नहीं आती है सर. Then you have to talk with your developer end of the day. चाहे वो रहे या आप रहे, अगर वो जो चीज आप बोल रहे हो तो उसमें एक टाइम का एक्सरसाइज है. फर्स्ट टाइम जो उसका लैंड वैल्यू आ गया बस हो गया, एंड दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉरएवर. दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉरएवर. इन्वेंट्री आएगा तो दिखाना है. यू कैन नॉट से जस्ट बिकॉज उसका 20 है के 15 है के 5 है. इधर प्रोजेक्ट करो या मत करो, और नहीं है तो अगर उन लोग नहीं कर सकते तो डेजिग्नेटेड प्रमोटर जो है दैट हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी. It goes Because very earlier clear. those old projects which are registered now, there is no land value, there is no corresponding inventory also of the landowners. दोनों साइड नहीं है. इम्पैक्ट क्या होता है कि लैंड वैल्यू नहीं है बराबर, राइट? बराबर. लैंड वैल्यू नहीं है तो उसका विड्रॉल कैपेसिटी कम हो गया ना. विड्रॉल कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट कम हो गया. फिर बट सर वो उसका कॉस्ट ही नहीं है. मैं आई हैव अ डिफरेंट व्यू. मतलब अभी जो रजिस्टर्ड हो गए प्रोजेक्ट के लिए तो कॉस्ट है. लैंड ओनर फ्री में तो लैंड नहीं दिया है. इधर वो शेयर रेवेन्यू शेयर ले रहे हैं, एरिया शेयर ले रहे हैं. मेरे खर्चे में आ गया. जैसे कि अभी ऑर्डर नंबर 56 को फॉलो किया तो हम कैसे करेंगे? अब कैसा करेगा मेरे को बोलना. अगर लेट्स से यही प्रोजेक्ट के अंदर अभी उसको उसमें order डिक्लेरेशन को भी ले रहे थे हम लोग कि विल नॉट सेल बिफोर ओसी. वी विल नॉट सेल बिफोर ओसी. तो डिक्लेरेशन देते सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं बनाने का, बट दैट डजंट मीन दैट बाकी का ऑब्लिगेशंस नहीं होएगा. ऑब्लिगेशन तो नहीं रहा. कल बोलेगा मैं पैसा नहीं, मैंने बेचा नहीं तो मेरा लायबिलिटी नहीं, ऐसा थोड़ी है. ऑब्लिगेशंस तो प्रमोटर को उसको we take a declaration from the promoter for कि the landowner has not sold because उसका landowner is going to keep that inventory for its self consumption, right? But that is self consumption, it's not selling, but that doesn't mean कि promoter का मैंने वो सिचुएशन बताया, quarterly उसने डिक्लेरेशन दिया, अभी बोलता मुझे बेचने का है. हाँ तो फिर खोलो. अभी क्या करें? खोलो तो क्या कर रहा है वो बताना. उसको बता दो. चलो एनीवे बहुत हो गया. अभी आगे बढ़ते हैं. I hope everyone is getting it. Are we sinking into what we are discussing? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी पूछो. सब लोग है ना वोकल रहो बिंदास. बाकी छोड़ दो सब शर्म वरम गया. हम लोग we should come to a good सीखने हैं. good learning process. Sir, एक ये related question है. When we take the ASR value as cost of project, so when we have to give the means of finance also. So in the books, the means of finance will be different because we have incurred the higher cost towards land. How do we adjust the means of finance? Because we have to match the. Yeah, so that is the thing. That is why अगर let's say given sir's example 12 करोड़ रुपया डाला, 10 करोड़ का लैंड है और 2 करोड़ का खर्चा, 12 करोड़ तो आया रहेगा. तो 12 करोड़ इधर प्रमोटर ने खुद का डाला रहेगा. फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ. या 12 करोड़ प्रमोटर ने खुद का डाला रहेगा या उसने बोरो करके डाला रहेगा. फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो भी रहेगा वो जो भी करके उन्होंने डाला रहेगा, राइट? तो मीन्स ऑफ फाइनेंस में आप 12 करोड़ बताएंगे कि 4 करोड़ बताएंगे बिकॉज दिस व्हाट डू से Yes, sir. फॉर्मेट सेज दैट वे. Format. What will you show?
actual तो means of As finance में a, forget everything. As your chartered accountant, as a professional ethics, what you will show? well, So when as a professional ethics, if you are going to say the right thing, and it is not mapping up, you have to just disclose in observation. Are we not just because following this form, we are violating our professional ethics? I'm asking very simple question. Good insights so far about the last, about ethics. When we are going to give the certificate, whatever is designed and specified Yeah. under particular act or rules by a particular government department or agency, we have to qualify in Yes. our observation, Yes, that's what I'm saying. and then we can say we are not violating our ethics. 101%. That is why it's become more important कि हमको बता के वो करना चाहिए. These are the key areas of Form 3, where more and more professionals have doubts, confusion. And such groups are very useful. पूरे साल भर में आपको 5-7 प्रोजेक्ट में भी यदि एक कोई पॉइंट काम का मिल गया तो योर कमिंग हियर इज बेनिफिटेड. कितना भी ट्रैफिक में 2 घंटा आप अटक गए, लेकिन एक पॉइंट आपको सुनने को मिल गया इन दिस डिस्कशन, इट इज वेरी वेरी यूजफुल. भाई आपको बोल ट्रैफिक में तो सुन नहीं पाए, ऐसा हो जाएगा. ट्रैफिक में आप 2 घंटा मार्जिन लेके निकलते हो, ऐसा नहीं कि आप पहुंचो. 2 घंटे पहले ही निकला हूं. आपके लिए उन्होंने फोटोग्राफी रुकवा दी. ओके, मुझे लगता है 2-4 मिनट सब थोड़ा ये नेक्स्ट कंप्लीट कर लेते हैं, सो दैट वी कैन बी मोर फोकस्ड, राइट. उधर उसको थोड़ा बंद कर सकता हूँ यहाँ पे. I think we have good insights about intricacies and practical difficulties about important parts of land cost, as well as the premium, TDR, and other aspects, which are key component of the substantial cost of the project, right? Now, if we move from table A to B, just to have a look, which we started right now. So you see the form A and table A and table B both are same. There is no change, except whatever cost really incurred, which we are counting for the certification purpose, is kept in table B. And table A is filled up at the time of registration. And this part is also important as a chartered professional who are engaged in company, this project registration with RERA. Because from table A, this cost has to be logically well thought of, well planned of, and with the explanatory thing which we are discussing right now, with things which are explained in the rules, regulations, and their explanations, not only in the format. If we go only through the format, you will have your own perception about the wordings. But these things are same authority has clarified by way of the regulations or rules or some circulars. I will talk about one circular of 2017, circular number 7. Maybe of some 1st July 2017. This is very important circular wherein explanation about yes, let us welcome our WRC Secretary General Madam.
वेरी गुड इवनिंग। मैडम इधर आइए ना, आपकी जगह है। यस आइए, थैंक यू। इधर फ्रंट में सेंटर आपका मैडम, आइए इधर जस्ट। So glad to see such a good numbers and good that this committee, I mean, RERA core committee is doing wonderful work and it is very vibrant. And Minesh Bhai, Dilip sir, all of them, Shashank ji, all of them, and yeah, so looking forward for many more sessions. And similarly, we have other 9 study groups. So looking forward for your contribution there as well, wherever, whatever your area of interest is. And yes, what I understood is कि इसका 45 days में एक meeting हो ही रहा है, Minesh ji sir. 30 days में, not 30 days, very good, और very we good. request to give So more. this is first one and looking forward for 11 such more meetings. And of course, Prasanna ji is there, Rajesh bhai is there, Mamta is there, all of them. And we are trying to make it more strong. And strong तो है ही sir. और भी कैसे बनाएं और आगे कैसे करें. और लीडरशिप भी बहुत स्ट्रांग है सर की और पूरी कोर कमेटी की. यस सर. यस, जब आप आते हो तो मुझे एक सपोर्ट ये मिलता है कि इससे और आगे बढ़े तो WRC के लेवल से और नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंचा जाए. श्योर सर. Everyone knows any project without chartered accountants contribution cannot be completed. तो रुपया विड्रॉ ही नहीं होगा सर्टिफिकेट 3 के बगैर. And this is the beginning and this much power is given. Project cannot take off. Correct. And then other opportunities as a expertise. Being chartered accountant, we have knowledge of GST, we have knowledge of income tax, we have knowledge of the FEMA, we have knowledge of anything. And we can enrich by having the basic knowledge about architectural basic knowledge. Whatever they are giving to us figures, thereafter we can grab those things and add our basket, and then we can provide the complete solutions to the promoters. Sure. And when we provide this quality and advisory role, then quantum of fees might jump. जब तक आप बोलते हो कि जनरल डॉक्टर के पास तो जो 200-500 चार्ज उतना ही है, जो केबिन में बैठा और बोलेगा 2 महीना बुक है, और जब देखो तो न्यूज़पेपर पढ़ते या गप्पा मारते तो वो 2000 से 3000 चार्ज. अपॉइंटमेंट में भी आपको फॉलो अप करना रहता है. तो काइंड ऑफ वी हैव टू मेक आवरसेल्फ नाउ टू मेक इट काइंड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी. WRC का कंट्रीब्यूशन मैडम हमें क्या चाहिए कि रेरा के पास किसी भी तरह से हमें जैसे देर आर बिल्डर्स एसोसिएशन, तो ऐसा नहीं कि वहां पर advocates are appointed and they are called SROs, right? SRO advocate का association नहीं है वो, builders association. Yet professionals are appointed and things are taken care, and those opportunities we have never thought about our being the CA institute. I come across with some of the argument या some suggestions. हम तो पार्लियामेंट से पैदा हुए हैं तो हमारा पोजीशन बहुत हाई है, लेकिन बाकी वहां पे तो पोजीशन कुछ भी नहीं बन रहा उसकी वजह से. तो कुछ तो रास्ता निकाल सकते हैं, मे बी सम डिवीजन और सम काइंड ऑफ थिंग सच दैट आवर से विल इंक्रीज. आज हमें अपॉइंटमेंट लेना हो कि वी वांट टू मीट, तो हमारे पास में एक्सेप्ट फ्यू पीपल हु आर हैविंग कनेक्शन 1-to-1, जबकि हमारा नाम तो रेरा के बहुत ऊपर है. उनके पास टोटल 44,000 सब मिला के लोग नहीं है, प्रोजेक्ट्स है उतने, लेकिन यहाँ तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्ट्रेंथ है और हमारी 3 लाख प्लस चार्टर्ड की स्ट्रेंथ है ऑल ओवर द कंट्री. एंड वी आवर होल कंट्री इज रन बाय ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंट. हम चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना काम बंद कर देंगे तो इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है. तो हम रेरा के साथ किस तरह से अपने बॉन्डेज बढ़ाएं कि वो हमें एक कोर टीम को, आज भी मैं मिल के आया इधर आने से पहले, बट अभी व्यू पॉइंट बदल गए उनके. 2-3 महीने से 2-4 मीटिंग मैंने की. इनिशियली दे वर वेरी इंक्लाइंड टू हैव कोर टीम एज ए
their whatever team they call, un team mein, so that whenever they come out with some circular or some kind of notifications, so these are things which are impacting us also. और हमको लगता है कि यार नॉलेज हमारा अकाउंटिंग का है और निकाल वो रहे जिसका मीनिंग जो है मतलब इज डिमीनिंग द प्रोफेशन, ऐसा बोल सकते हैं आप। उस पे लिखते हैं एनुअल ऑडिट रिपोर्ट और लिखते हैं दिस आई सर्टिफाई हियर विद एनुअल total withdrawal and deposits of the project is this much. This is the word they are using. They don't know. Maybe they are having the professionals hired for drafting the such things. लेकिन हमारा से नहीं होता. But at least this has begun interacting with the chairman and secretary and other top officials. So लेकिन to get it implemented is a key thing. तो आप So maybe in one of the sessions we can call them as a special invitee and actually जो रेरा के सेशन में, रेरा का जो बड़े सेशन है जहाँ के आपने 200-400 लोग होते हैं, ऐसे सेशन में हमें इनवाइट करना चाहिए उनको। सर मैम अभी बोला सही है। रिप्रेजेंटेशंस वगैरह चाहिए वहाँ पे हम देख सकते हैं और not only RERA representatives but also other professionals also, as we discussed in core. We can always look forward to have inputs from them. And today also we have like due to the efforts of yours and the whole core team, due to hybrid meetings, Sure. we have members from Pune, Kalyan. Very good, very good. So all And, those and all. Aurangabad also. And again, very good work done by them. Of course, Shashank, Kunal, Minesh, all of them. And looking forward. And I think this study group has reached 70 plus strength. And one of the highest, this is technically 5th study group of new year. And this is again, looking at the participation, it is one of the finest. Oh, Thank you. This is all the very best and all 21 of us are committed to serve, and any help, anything, we are just a call away. And to develop the litigation practice by chartered accountants, because RERA is a special law, very limited provisions are there, and our professionals can jump into the litigation practice, which is the forte of the others. We'll take a photo. हाँ, yes. पूरा ग्रुप का फोटो इधर यहाँ पे आएगा या फिर या बाहर निकले हम लोग कैसा करेंगे? एक तो ऐसा करो, इधर का ले लो फटाफट, फिर बाहर निकलो। चेयर सर अंदर ले लो। फिर बाहर आ जाओ शुरू and yes. And then I think we have talked about table A and B enough, right? Switch to table B, subsequent part where the withdrawal amount is shown, right? And prior to that, I wanted to point out engineer certificate, right? If you look at the engineer certificate, development cost, estimated cost of the construction as certified by engineer, cost incurred on additional item included, this is part of the table A. Yes. Yes, if you look at this portion, development cost expenditure for construction, minimum of A and B to be considered. This is very important, and normal mistakes are happening in this part. A is construction cost incurred including the development and infrastructure for the same as certified by the engineer. Form B, which we are getting from engineer, that figure we have to mention here. And then B is actual cost of construction incurred as per the books of accounts, which we certify, will come. Suppose engineer is giving 100 rupees and we have incurred 102 rupees. A and B figure is this, and then whichever is lower. What is the lower figure? 100. And then 100 rupees will be considered for the withdrawal purpose in this format. Consider vice versa. If our cost is 90 rupees, engineer cost is 100 rupees, then what cost will be considered? 90. This is the thing which you should take care of. De do bhai. Now another part is what cost you should not consider when you are making form 3. This is the project related cost, project cost.
This is two parts, land and development. And in a project or in a company or a developer's firm, what other cost which should not be considered is they are spending money on their brochures, literatures to market their products. Such things are not cost of the construction. It's their choice. If they want to sell it, they have to spend money. They are spending by making payment to the brokers, other schemes. All such expenses will not come in this format. And second part is taxes, like on the project, if profit is earned by the promoter or some obligation of tax liability comes, are not part of the taxation. I am not talking about TDS, which they are deducted by the LOTs, is a part of the sales consideration. If 1 crore rupees they are buying, they are deducting 1 lakh. It means 99 lakhs they will pay. Collection will be considered 1 crore. But you can put whatever remarks in table G to satisfy yourself and justify your form 3. So what should come in that second clause? Cost incurred on additional items not included in the estimated cost as per engineer certificate. If you see the form 2 of the engineer, there are construction cost is specifically given. Additional cost, if I consider from my perspective, Bhavesh can rectify, there can be other amenities is part of the construction cost. If the main building is X and ABC is attached to this, which are additional items which are not covered in the cost of the project, might be taken in this, and this will also be part of the overall cost of the project. Stack Bhavesh, parking, please give your stack views. parking. Now, many times engineer certificate give stack parking differently in that other items. अच्छा पानी नहीं दिया आज आप सुबह से चाय बेसिकली क्या रहता है पानी जब हम इनिशियली फॉर्म 2 करते हैं वो उधर ही रखा है मेरे ख्याल से. Amenities will be considered in cost of construction only. It is also specified in form 2 also. The cost of amenities which are provided in table B, table A, table B. That's part of the construction. in two here, basically when you are registering for the first time, there is only table in form 2, there is table A and table B, which is being done. Now in form 2, there is one table C also, which is not covered in table A and table B. So what happens, over when the development is going on, there are some changes which happen, and then there are some big variations which can happen. So at the time of estimation, that didn't happen. So they are covered here. So even the value which is written, that will be the value which will be in estimate, and the same value will be in the actuals or costing. That's what it is. कि जो ऊपर डेवलपमेंट कॉस्ट है इसमें सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में सपोज बिल्डिंग है और उसके बाजू में क्लब हाउस भी है गार्डन भी है तो वो कॉस्ट क्लब हाउस और गार्डन की कॉस्ट यहाँ लिखनी है नहीं अगेन व्हाट डिड ही सेड इज दैट दिस कॉस्ट गार्डन बिल्डिंग फलाना ढिकला जो भी है दे आर पार्ट इन टेबल ए एंड टेबल बी दे आर ऑल पार्ट ऑफ टेबल ए एंड टेबल बी ऑफ Form 2 is an engineer certificate. Can you show Form 2? Please दिखाइए. Form 2 is an engineer certificate. Okay. Form 2 का टेबल ए के अंदर बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसकी बात है. बिल्कुल. टेबल बी के अंदर कॉमन कंस्ट्रक्शन रहता है. जो स्ट्रीट लाइट्स, रोड, एसटीपी, सीवरेज, वो टेबल बी पे आया. इसमें लिखा है टेबल बी में क्या है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ internal and external development. बराबर. Amount is amenities and facilities in the layout. बराबर. तो वो टेबल बी में आ गया. तो टेबल ए और टेबल बी है कंप्रेस ऑल एज पर टेबल सी वी आर टॉकिंग ना. नहीं बी में की बात कर रहा हूँ. अभी सी में आप जाएंगे. पहला ए और बी क्लियर हो गया. पहले बी देख लेते सर. पहले दो की बात है. एक मिनट ए पहले सब तो देख लो. Table A specifically speaks about the total estimated cost of the building, wing, layout, plotted development as on the date of registration. ये table A का first point है.
एंड टेबल बी जो है वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड फेज। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स जो भी फेज में मतलब जो भी प्रोजेक्ट का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो उसका इंटरनल एंड एक्सटर्नल है। फिर उसमें भी उन्होंने क्या बोला है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स इंक्लूडिंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज इन द लेआउट एज ऑन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये क्लब हाउस जो मेरे एमिनिटीज हुआ, यस, तो ये टेबल बी बी में आ गया, बी में नहीं आएगा, नहीं आएगा बराबर। तो अभी फॉर्म 3 में जाओ। हाँ, टेबल सी अभी नहीं, पहले इसमें अभी आगे टेबल सी में जाओ। सी तो सर वो एक मिनट जाते हैं। That is the thing. फॉर्म 3 में जाओ। अभी बीएमसी का नॉर्म्स आया था कि आप सब पॉल्यूशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वैलिडिटी सबको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। बराबर। जस्ट एक एग्जांपल, तो आपका वो किधर भी फॉर्म 2 फॉर्म 3 किधर का भी पार्ट नहीं था जब भी मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट डाला था तभी, ठीक है, तो अभी किधर डालूंगा वो थर्ड पॉइंट प्रोजेक्ट का तो खबर नहीं है, नहीं वो तो बेसिक चीज बात कर रहा हूँ मैं। समझो मेरा क्लब हाउस का आइटम किधर डालना है, वो बी में आएगा। फॉर्म 3 में कहाँ है? Form 3 में फर्स्ट पॉइंट में ही आएगा। Form 3 में फर्स्ट पॉइंट में ही आएगा। कॉस्ट ऑफ इनकर्ड इसके ऊपर वाला ये वाला बी में, इधर 1A में 1B में ही जाएगा। ए और बी का टोटल आएगा ना। हाँ, ए और बी का टोटल आएगा। नीचे जाओ। और नीचे थोड़ा तो 2 नंबर वाला ना, हाँ ये वाला। हाँ 2 नंबर अभी वाला ये लिखा है incurred expenditure for development of entire project excluding जो 1 to 1 वाला ऊपर नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल लिया है सैलरीज, कंसल्टेंट फीस। ये 3 वाला है। अब 2 पे से 3 में जा रहे हैं। नहीं हम लोग 2 की बात कर रहे हैं। मैं अभी क्या बोल रहा है कि इंक्लूडिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेजेस, ड्रेनेज, लेआउट ऑफ रोड्स, बरोबर, ये कॉस्ट मुझे यहाँ डालनी है। 1 सेकंड, आप अगेन जाइए, वही रूल तो 4 टेबल बी में आएगा मेरा, क्योंकि रोड का लेआउट है मेरा, वो तो मेरा डेवलपमेंट हुआ, वो टेबल बी में कंसीडर होगा। आपका अगेन जो भेजा है ना उस पे रूल 4 और एक्सप्लेनेशन 4 जाइए, आपको आंसर मिलेगा। उसमें ऐसा बोला है कि मेरे ख्याल से जो टेबल बी में जो मतलब इंजीनियर सर्टिफिकेट के जो टेबल बी में जो आपने आइटम्स कंसीडर किए वो कंसीडर नहीं करने का, that will not be considered elsewhere in the full form 3। मतलब you cannot have a double entry, मतलब जैसे कि आपने कुछ खर्चा इधर डाला है तो उसका वापस नीचे आप इफेक्ट नहीं दोगे दूसरे नीचे नहीं डालो, मैं समझू तो लेआउट नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि जैसे कि टेबल बी में जो इंजीनियर का फॉर्म 2 है उसमें जब भी लेआउट रोड है या फिर जो एमिनिटीज है, क्लब एमिनिटीज है, जो भी है उसका अगर खर्चा डाला है टेबल बी में, टेबल बी में अगर उसने वो खर्चा डाला है तो अगेन यू कैन नॉट यहाँ पे वो आएगा, हाँ वहाँ पे ही लेना। तो यहाँ पे रोड वाला नहीं लिखा नहीं, है, वहीं डालना है, वहीं वहाँ एंट्री का कोई मतलब ही नहीं है उससे। हाँ अगर आपका इंजीनियर नहीं डाल रहा है तो आप डाल दीजिए, तो इंजीनियर नहीं डाल रहा है नहीं डाल रहा है तो डाल साइड ओवर सर आपने देखा रहेगा कोई साइट के ऊपर एक कंटेनर लगाया रहता है, कंटेनर फ्री में नहीं चलता है, कंटेनर का कॉस्ट लगता है, एसी रहेगा अंदर, इंजीनियर बैठा होगा, 3-4 सब होगा, खाने पीने का खर्चा वो सब है, तो इंजीनियर वो सर्टिफाई नहीं करता है। वो समझ गया, मैं डेवलपमेंट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। तो वो जितना भी आपका वहाँ का कॉस्ट है ना साइड का, वो सब कॉस्ट आपका यहाँ पे आएगा 3 में। ओवरहेड की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट कॉस्ट। You are right. This wording was used. 1 second, I will tell you. This wording was used. Development work and initially. If you go to the initial 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंजीनियर सिर्फ मटेरियल कॉस्ट ही लेता है. Then it got evolved and changed. So the concept is that if engineer consider in the engineer cost and which is explained rule 4 का explanation 4 में all the costs should be mutually exclusive. So if engineer has taken that I should consider as a chartered accountant cost that. If engineer has not considered, then I will go into other relevant heads. Well, let's say engineer ने consider नहीं किया. I'm just putting different. ऐसा इसमें consultant भी लिखा है. एक simple example देता हूँ. Architect है. कोई इंजीनियर बोलेगा ये थोड़ी मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बराबर, राइट? तो उसने कंसीडर नहीं किया, तो मेरे को कोई तो वे डेवलपर को रहना चाहिए कि वो कॉस्ट क्लेम करने का। शॉर्ट में यही बात है कि इंजीनियर का साइट डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसने नहीं डाला है तो बस सर सिंपल। ये क्या है, इधर भी सब अटका,
वो इधर ये है रेसिड्यू है, रेसिड्यू क्लॉज है। इधर और कोई नहीं मिला, इधर चिट कर। एक्सक्लूडिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो ये अगर रेजिड्यू है तो सेकंड में क्या है? क्या वो टेबल इंजीनियर के सर्टिफिकेट से आता है। इंजीनियर में हाँ वो टेबल सी ये टेबल सी ये नया है सर, ये नया है। ये फॉर्म 2 का है। इसमें 1 सेकंड एक्सक्यूज मी, इसमें नेगेटिव आइटम भी आ सकते हैं। हाँ डिलीटेड। पॉजिटिव आइटम भी आएगा, जरूरी नहीं है नेगेटिव भी आ सकते हैं। यस एक एग्जांपल बोलता हूँ आपको। देयर वाज ए वन स्टफ व्हिच वाज सपोर्ट और इक्विवेलेंट। समझा? तो उसने जो वन स्टफ जो करना था उसका उसने जो हायर रैंक का उसने डाल दिया और फिर एक्चुअली इक्विवेलेंट आया, तो इक्विवेलेंट को किधर एडजस्ट करेगा? इधर। तो क्या हो गया? राइट? Thank you. I hope everyone is getting answer. Yeah, I hope everybody is enjoying the discussion ना? तो बात करो ना भाई यार, अभी तो नाश्ता भी मिल गया। और एक बार होगा। छोटे प्रोजेक्ट में क्या होता है, इंजीनियर फिजिकल वर्क के हिसाब से कॉस्ट लिखते जाता है भाई, और अपने अकाउंटेंट को पूछता है कितना खर्चा हुआ। सीधा बात करो ना, सीधा मुद्दे की बात करो। चलो हाँ, उसका 100 रुपए रहेगा ना, अपना 60-70 रुपए रहता है। मतलब दिस थिंग कंपैरिजन में जाएंगे ना, वो 100 रुपए लिखते हैं तो 100 का 120 होता है, अपना 60 का 70 होता है, 70 का। तो बिल्डर क्या करता है, बहुत सारा मटेरियल कैश में परचेज करता है, स्टील से लेके या बिल लेता भी नहीं है, जीएसटी भरने आ जाता है तो। हाँ वैसा रिकॉर्डिंग वो मतलब कैसे उसको ये कर सकते हैं। नहीं, वो जो भी है ना, आपको बुक में जो दिखा वो करो ना भाई। लेस ही है ना, विड्रॉल लिमिट इज व्हिचएवर इज लेस, so you do not have anything। आपको जो बुक में दिखा वही करो ना, बाकी वो ऊपर का डेवलपर जो भी करेगा, इंजीनियर जो भी करेगा, उधर ही था। वो A and B है, तो अगर इंजीनियर अगर ज्यादा लिख रहा है और आपका कम आ रहा है, वो हर बार रनिंग वाला है। अच्छा तो डेवलपर और सर होना भी नहीं चाहिए, अगर मैच हुआ ना तो लफड़ा है। तो लफड़ा कर। क्या है, इंजीनियर विल सर्टिफाई अकॉर्डिंग टू फिजिकल वर्क, बराबर है। देयर विल बी रनिंग बिल्स, देयर विल बी सम बिल्स व्हिच आर नॉट अक्रूड। अच्छा कुणाल जी that is not a question for understanding, वो तो होता ही है। वो नहीं, वो समझ गया। नहीं क्वेश्चन है कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट वर्क्स we have got in Roman 3 क्वेश्चन है ना, incurred, और वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है कि उधर एस्टिमेटेड टेबल बी में if engineer adds those expenditure, तो it means in the same authority there is a inconsistency। तो हम लोगों के लिए नेक्स्ट पॉइंट वहां पर जब रिप्रेजेंटेशन देने का नौबत आएगा तो वी कैन टेल देम कि ब्रिंग सम क्लैरिटी अबाउट दिस इज इन रूल में तो क्लियर कर दिया है। व्हाई दे आर क्लियर किया है वहां किया, तो इधर फॉर्म 3 में इधर क्या है, इनिशियली अगेन आई एम सेइंग द हिस्ट्री ऑफ इट। हिस्ट्री तो सही है। इनिशियली इंजीनियरिंग का था, नहीं आ रहा था, तो वो आज के तारीख में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हम कोयला का ट्रेन में चढ़ते थे, इंजन नहीं था, इलेक्ट्रिक इंजन नहीं था, तो अब हमको मालूम है कि कोयले में धुआं में कपड़े गंदे होते हैं। हाँ, लेकिन अभी कोयला का ट्रेन नहीं चलता है, लेकिन तो वही बात बोल रहा आज के तारीख में भी है। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि नाउ रेरा अथॉरिटी को यदि ये पॉइंट आउट कर सकते हो, रिप्रेजेंटेशन वी शुड मेक, दिस स्टडी ग्रुप शुड रिप्रेजेंट देम so that they can also understand कि people, knowledgeable people are sitting and they're pointing out valid questions, right? Okay? And good, मतलब ये एकदम obvious है इधर। मुझे तो लगता है कि ये सब खर्चे उन्होंने लिए कि नहीं, उधर कोई लिस्ट ऑफ which items they are covering ऐसा कोई हम लोग को मिलता नहीं है, तो then how can you decide कि उन्होंने लिया भी है कि नहीं? तो उसके लिए that is the when you take a form 3 assignment, you should sit with the people from architect, engineer, understand the system. It is not just you rush and take an assignment. That is a main thing when you get, that is a principle of engagement for a chartered accountant when the person is taking the job. So are we violating principle of engagement? Right. These are the some guidelines, right? Take it positively and enhance your value by way of suggesting these correct things.
उनके लिए फायदा ये होगा कि इनकम टैक्स में भी दोज विल बी इनकंसिस्टेंट विद व्हाटएवर बुक सेज. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम खत्म होगा उसके बाद. ओके, टैक्सेस. यहाँ पर जो है इनकर्ड एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टैक्सेस, सेस, फीस, चार्जेस, प्रीमियम, इंटरेस्ट टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. These taxes is not related to income tax or such kind of those after having the profit in the project which the promoters are paying. These are not those. These are the taxes: property tax, construction tax, agricultural land tax, or उसको क्या बोलते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन, LUC. Any kind of government statutory body taxes are covered in this, and any penalty, interest, those things you can take care. अभी आ गया फॉर्म पॉइंट नंबर 3, total cost of the project and the proportion of the cost incurred, and then finally amount which can be withdrawn from the designated account. Here the balance amount will be reflected. Total amount which can be withdrawn, amount already withdrawn, 6 numbers paragraph, less amount already withdrawn till date, and net amount which can be withdrawn. Expenditure incurred, suppose 100 crores. Cost of project, cost incurred, suppose 100 crores. 30 crores is outstanding. Suppose 70 crore तब तक निकल चुका है या 80 करोड़ निकल चुका है, तो 20 करोड़ is the eligibility for the promoter. अब बिल्डर को 2 करोड़ आया तो बोला, उसको लगता है बहुत पैसा आ गया, अभी मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं, वो आपके पास पूछते हैं, उनको ये नहीं पता होता है. तो यू आर क्लियर कि ही इज एलिजिबल. एंड दूसरा क्वेश्चन ये भी कई बार आता है कि जब 20 करोड़ हम निकाल सकते हैं तो हमको साल भर यही पैसा चलेगा, इतना पैसा आने वाला नहीं, तो क्यों फॉर्म 3 हम बार बार बनाए? एलिजिबिलिटी के लिए फॉर्म 3 का जरूरत है ना. तो टू सम एक्सटेंट यस, बट सब्जेक्ट टू क्वार्टरली अपडेट्स, दैट यू कैन नॉट वायलेट. आवर एक्ट सेज दे हैव टू क्वार्टरली अपडेट द वेबसाइट. देयरफॉर these quarterly updates are compulsory irrespective of whether they have enough withdrawable limits. I will add something over total cost of the project. There are two things. Like, firstly, we have to check whether all the expenses are incurred or not. Like sometimes there are very high escalated expenses or land expenditure also which is payable. Like if you have bought a land for around 10 crores and only you have paid 2 crores. So there is a liability of 8 crores in your books. So wherever possible, you can restrict by putting a note as it is payable. If the amount is very huge, I'm telling you, you will have to take project on project wise, client by client wise. If the project is very huge, you will have to take your own consigns and you have to put a note as it is payable. I'm not allowing it for withdrawal. You can make a point over there, put an extra row, and you reduce the amount which is incurred. In Gujarat, it is totally on incurred basis. On paid basis. Paid basis. Paid basis. So here also we can put in some projects. I'm not telling you in all projects. So in some projects you can take a call. But in RERA, In RERA they allow, but there are like in one of form 3, we have not given the limits for the rent payable or for the land cost which is incurred and which is payable to the landowner. So we are not given the withdrawal limit for this. That the spirit कि वो पैसा इसके लिए चाहिए कि पेमेंट कर सकते हैं. Yes, we have with our WRC chairperson. रेवानी मीटिंग में करूँ. Please be seated. Please be seated. Welcome, Ketan bhai. He was so busy and not having enough time to come. No, our audit we have to close today. he managed to be with us. And sit. Please sit down, everybody. Please sit down. We'll just take 2 minutes. We thought we'll just come say hi to everybody and then go. Actually, our auditors are sitting. We were solving their queries and their points, and since afternoon that is going on. So
First of all, congratulations to entire RERA group. I think up till now this is perhaps fourth or fifth meeting of the study group, but I haven't seen so much attendance. So I think this is a promising area and where members are interested, and I am sure this study group as well as this committee is going to rock. And he has been always kind, Dilip bhai has been always kind to do a lot of activity with RERA. Those who are there in the RERA committee, please come on first, second, third, whatever meetings are there. And irrespective of that, be it as may be, there was a publication in year one which is very large publication. काफी बड़ा book है जो taxman had published और उसको हाँ उसको I was thinking that can we have some smaller publication, some concise publication. It could be focused on maybe this we can divide in couple of publication and one can be focused for the practitioners. So like some time back when the central committee guys had come, we visited RERA and their complaint was then authority RERA, Ajoy Mehta was having a complaint that the practitioners are not having clarity about their own responsibility. And that time those 700 notices were issued and we were trying and pleading before them saying that, okay, sir, is bar chhod do. And second time, we will try and educate our members. So the members who were signing annual that certificate had also signed quarterly or whatever. And they had issued some notices, but fortunately that time they got convinced. But then same time they said that, you know, ये दोबारा नहीं होना चाहिए. We had as ICA हम तो यही बोल के हैं कि नहीं we are educating, we are telling our members and इस बार छोड़ दो वगैरह वगैरह जो रोना धोना करना था we did that. But taking a lesson from there, I thought let's have some publication, one focusing towards members, those who are actually working on certification. So he had some serious complaint also. He said member, he had one or two cases where member had not seen even bank statement, that whatever, you know, we are writing, I don't practice in RERA, but whatever I heard from there, I'm just repeating here. So he said that whatever specific bank account में पैसा आना चाहिए उसमें आया नहीं था, फिर भी member ने certificate issue किया था. And I very bluntly told, with me central council members were there, I very bluntly told sir उस पे action ले लो, आपको जो लेना है ले लो. If member has not seen bank statement and he is giving a certificate, we can't help as a CA institute to them. So few points. One, I think let's have one good structuring of couple of program, maybe, you know, one in quarter. Of course, the RERA committee also will give input. RERA, the corporate committee chairman, vice chairman. But I think you all are the real practitioners. You are interested and you are dedicated to RERA. So please suggest some few structures. It could be a whole day program. It could be some evening half day program. That is point number one. Point number two, publication. Third, representation. If we want something to be represented before RERA authority, this time also I have received already a call last week from Delhi saying that they have some point and they want to visit here. So along with that, if we have some point, we can add up that and keep our letter ready. And as and when the central committee, somebody, some central council member, Abhay Chajad sir is going to come. So I spoke to him twice and he is going to give me the date. But prior to that, if you have some point, we can, you know, at least keep our letter ready, or we can give our letter to them and ask them to incorporate our suggestion also along with their suggestion. And that day, probably I'll try and connect with couple of you. And if you're there, you can join us to meet RERA authority. It's here only in BKC. I think you must be, all of you must be aware of it. So we intend to do that. So three to do. One, representation. Second, this publication, whatever input you can give. Third is on program, like general member. आप तो study कर ही रहे हो, you are, you know, debating, discussing, expert. And of course, RERA group has been more active, but he came in the afternoon up and I requested कि, you know, एक meeting तो हो ही रहा है, but उसमें और भी कुछ ज़्यादा कर सकते हो. 7 महीने में 2 meeting भी कर लो तो problem नहीं है. हर महीने करने वाले हैं. Very good, very good. हर महीने meeting करो. And for out of Mumbai members, give them link. Yes. So that is the thought process, so that they can join over the link. And in the subjects also, if whatever, you know, you know, if you can keep involvement of the, for example, people from industry. One last feedback
I don't know if anyone is here from those builder industry, like, One is there. Yes. One and Good. second person who is also. Good. So, we know, like, for example, there are n number of, like, for example, Hiranandani, Kalpataru, Loda. So these all builder developers, account and finance team. If we can tell them also to be involved, so we have industry perspective, or you invite them as a speakers. Sometime, you are inviting somebody, let's say from Loda, somebody from Hiranandani, somebody from Kalpataru or whatever. We have, such 20 good builders who do proper compliances, and where there are no other problem. These type of people you can invite to the study group, also to those RERA program also. So with this, thank you so much. And with me, I have Sanjay Bhai, Pinky Madam. I'll request both of them also to, give their feedback. Actually, in excitement, I spoke first. Normally, we follow that protocol, and they talk first, and then the chairman speaks. No, but I go chairman, our chairman, Captain Sayed sir, because this RERA committee, RERA study group, I am watching since last 3 years. That this group is doing very well. बाकी सब ग्रुप से ज्यादा यहाँ अटेंडेंस होती है और बहुत रेगुलर है. So big kudos to you all. So to make it very live and to the sir also कि वो भी उतना लाइव रखते हैं. अपने ग्रुप में भी उतने मैसेज है जो उनके चलते रहते हैं and बहुत अच्छे से सबके रिप्लाई भी करते हैं. So thank you दिलीप भाई for that. And आगे भी पूरे साल आप लोग इसी ढंग से स्टार्ट रखिए और जितना हो सकेगा आपकी जो भी सजेशंस है आगे हमें जो भी कुछ करना है keep giving suggestions, we will follow that, we will do that if possible. And ये जो बुक की बात कर रहे हैं, ये जो बुक हमने बनाई थी, दिलीप जी को भी याद होगा, हमने जब बनाई थी बुक, I was one of the coordinator. तो कम से कम 200-250 उसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं. तो हमने काफी यस तो मैंने सबको आधी रात को भी तंग किए हुए हैं क्योंकि उसमें मोस्टली बहुत लोग जो है वो सीए नहीं थे, एडवोकेट थे, तो उनको फुर्सत ही नहीं होती थी. एंड दैट टाइम जस्ट कोरोना पास हुआ था तो सारे केसेस एक साथ में आ रहे थे, तो काफी मेहनत करके बुक बनाई. लेकिन उस समय फर्स्ट बुक थी तो उन लोगों ने सारी अपनी जान लगा दी कि सब सारी इंफॉर्मेशन एक में आ जाए. तो यू कैन सी इट्स अ मास्टर गाइड के तरह हम इसको यूज कर सकते हैं. बट इफ यू वांट टू रीड थोड़ा ऐसे डर लगने लग जाता है कि इतना पढ़ना पड़ेगा. तो सर व्हाट द केतन भाई सेइंग, इट्स अ करेक्ट, वी शुड मेक अ or maybe bifurcate this into 2-3 publications. Yes, इसके बाद भी हमने एक और बुक भी निकाली है. एक second edition भी निकाला है. Last year we have come out with the second. Yes, with the second edition we also come out. But it's a correct कि professionals के लिए do and don'ts. तो एक होना जरूरी है. What is the responsibility of RERA auditor? What the CA can do? What the CA can't do as a statutory auditor? As a RERA certificate, who can give? Guidance not type में. That can be prepared and it should be prepared, I think. तो ये आप लोगों के लिए एक इस साल का असाइनमेंट है जो कि हमारे चेयरमैन ने दिया है आप लोगों को. इट शुड नॉट बी कि ये ईयर फरवरी तक चलना है तो फरवरी तक जाए. विद इन 1 or 2 months if it can be published then it will be more beneficial to all the CA. जो जैसा सर का एक्सपीरियंस रहा कि वहां जाके लोग बोल रहे हैं कि CA को ये नहीं पता वो नहीं पता, तो वो अभी से ही गाइडेंस नोट आ जाए तो वो अवेयरनेस हो जाए तो उतनी मिस्टेक्स कम हो. तो जितनी जल्दी आप लोग कर सके तो कोई भी एक रिस्पांसिबिलिटी ले ले उसकी और बाकी सब कंट्रीब्यूट. यस, so thank you again and all the best. So friends, after such an experienced lady already, she is taking part in that, and our ever enthusiastic and experienced chairman, उनके बाद मैं क्या बोलूं, फिर भी एक पॉइंट ऐड कर लेता हूं. Friends, you have learned the structure of WRC and ICI. There are representatives, there are committees, and there are seminars, faculties. But this kind of gathering is very effective because we understood through our experience only. Seminar में क्या होता है ना, one side deliberation होता है, and we wait for the CP only. And जैसे CP खत्म हो जाएगा 2 घंटा मेरा clear हो गया. But in such scenario, togetherness is there, cohesiveness is there. And since you are thorough professionals, you know the problems. You bring out those problems to the forum, and result इससे ज़्यादा आता है. So our more focus is on such interactions. Though अभी as I heard, RERA में मेरा practice नहीं है, but RERA is very critical law now.
Yes. And every now and then, every certificate is vouched very legally, technically, and financial implications are very large on it. So it is like every time you have to be agile. Now we are talking about the literature. Sir, you know, every year acts and provisions and rule, regulation, notification, circulars सब आते रहता है. We need to update documents all the time. So people like you, experts like you only can contribute. And जैसे जो ideas आ रही है कि segregate करो, topic wise करो, it's good idea. There may be 5 volumes, 6 volumes. जो volume जिसको चाहिए वो मिल जाएगा. And do and don'ts. One more thing I would like to come out with, sir. इसीलिए normally happens, chairman talks later. Because whatever we fail to notify or sound, he covers up. Sir, can we have a study live desk for RERA also? We have it in indirect tax committee. We have it for direct tax. And now since it is a live act, every day some or other query comes up in the group. And WhatsApp group में जो होता है ना, I know, कोई डाल देता query, एक लाइन में आंसर तो पॉसिबल ही नहीं है, as long as you are not talking to that person. But still people end up putting their opinions, and so सामने वाला और confused हो जाते हैं. उसको 4 opinions मिल जाते हैं. तो उसमें अगर लाइव अभी हम सर के chairmanship में we have started that. So एक हम series चलाते हैं संवाद विश्वास का. Wherein what we are doing is we are running a different help desk. So one is bank audit we did from 4 to 10. Then GST we do every 14, 28. Today we discussed at length and a lot of issues were discussed, and we are starting 20th we said 20th May. First help desk for direct tax will be there, and then it will run every twice a month. Basically, we have to freeze a date like GST 14 and 20 is a fixed date for GST. But income tax, there are other practical issues. That's what we were discussing. So we'll be flexible on date. I think taking a clue, Dilip bhai, you can think over maybe at least एक बार करके देखते हैं help desk, free help desk, and few of you can volunteer to answer the queries of member. And as a in the GST experiences, on an average in that 2.5 hours, we are covering roughly 40 odd queries, 40 to 50 queries, and each expert is answering some 7-8 queries. And we've told them that, you know, members also that बहुत specific मत पूछो, थोड़ा generic होगा तो दूसरे भी attend करेंगे. And I've been seeing that now it has picked up very well. Yesterday's GST help desk, over 100 people were attending. We had 40 queries. तो अब मेंबरों को भी पता चल रहा है कि हाँ चलो दूसरे की क्वेरी सुन के मेरा भी शायद नॉलेज अपडेट हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा. एंड दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, नो सीपी नथिंग. तो जिसको इंटरेस्ट है वही आएगा. पहली बार जब हमने किया तो हार्डली 25 लोग थे और कल 100 लोग थे. तो आई थिंक ऑनलाइन प्योरली ऑनलाइन. तो एंटायर रीजन एनीबडी कैन ज्वाइन फ्रॉम एनीवेयर एंड only specific. तो let it be even in RERA we can experiment that. क्या होगा पहली बार 10, 20, 25 लोग आएंगे और धीरे धीरे पता चलेगा, अवेयरनेस होगी तो बढ़ेंगे. And you all can be you know the panelist who can answer. तो हम क्या करते हैं, जैसे for example the GST which is running, we gather the queries till 12th. On 13th the convener or the chairman of the committee will distribute to 8-10 people queries. Then we create a PPT is displayed. Below the PPT, name of the replier will be given. उसको एक दिन पहले 8 query चला जाएगा. He has got 24 hours to study and frame his view. And of course, if let's say Dilip bhai is answering, Minesh bhai want to add something, they are allowed to add each other's view. Discussion. So they add on that. And बहुत अच्छा चल रहा है. So Manish bhai, I mean Rajiv bhai, Ashit bhai, like there are almost 15-20 people. तो 20 में से हम 2-4 दिन पहले पूछ लेते हैं कि इस डेट को कितने अवेलेबल है. And we need around 7-8 people to run that. कि अगर 40 क्वेरी है तो 5 आंसर करेंगे तो हो गया काम. We Yes, can good idea. RERA can be on 12. RERA R is like a 12. आप जो डिसाइड कर दो, हम तो आपके जब सेवा करनी है तो सब्जेक्ट तो नहीं है 100%. It will be good help for us because we are struggling to connect with the industry people. And like sir said, there are many listed builders also there. Big companies are there. Chartered accountants are working there, but they have their different mindset. To bring them to the forum also, to communicate with them that WRC is doing so much things for them. It will be a good opportunity for you all also, them also, and the hidden agenda to reach out till a last element of the fraternity. That one thing.
First of all, let me introduce myself. I'm Chartered Accountant Sanjay Nikam, Regional Council member. I'm Direct Tax Committee Chairman, and with the help of Sir's guidance, now I'm heading one other committee, Legal Committee. So I'm coming to that thing now. Legal Committee is for addressing the legal consequences or legal issues our Chartered Accountant facing in day-to-day practice in life, except specifically excluding disciplinary issues related or relevant with the institute's guidelines. Apart from those, in RERA also there are. I'll interrupt him. The concept, we are now in the era of branding. So we branded it as a Nyay Setu, basically. So any member receiving any show cause, let's say from RERA somebody got a show cause, somebody got from GST. There were few arrests happened in GST in last 3 years. So, taking feedback of the member, and Sanjay Bhai took a lead and we said, let's start Nyay Setu. So Nyay Setu will work like a bridge between the people who need legal support, and there are 130 people have volunteered. We are yet to, today that is one of the agenda. Maybe we will sit in night and work upon that, and we'll create a team of the expert in different area. So if I receive a show cause on, let's say, RERA, I don't know anything, I started practice, I did some mistake, I received a show cause. How do I draft reply? So I may go to some expert like Dilip Bhai and request him to draft a reply. कि ठीक है हो गया but कुछ तो चाहिए ना जो मुझे कुछ help करे. So that was the concept, and there were ingenuine arrests also happened in the past. So there WRC for first level will support. That is what in nutshell. I sorry for cutting him down because we have to run to meet the auditors again. I just told them that उनको भी offend नहीं होना चाहिए. मैं बोला एक 5 मिनट नीचे जाके हम आते हैं करके. But you can mention about DTRC. One more thing, that since you are in RERA, that doesn't mean you are not in direct tax. Everyone is in direct tax practice. That is why you are in RERA. Friends, a signature event we every year conduct, and it is a successful event. We are regularly running it. So on 12th and 13th, Yogi Sabhagrah and 20 and 21 at same venue. Every 4 days in 2 different weeks. There will be two sessions every day. So 12 and 13 and 20 and 21 June, there will be a direct tax reference course, and the cream of the faculties will be there. Whole nation में जो leaders है वो सब आते हैं, and many of you already attended that. So this year also we are organizing, and we are requesting you to register yourself and just convey this message to your colleagues also, so that larger अगर audience रहेगा तो faculties को भी एक extra edge देने के लिए motivation मिलता है. So welcome you all there. Beauty of this event is we did it 3 years so nicely. First time we didn't announce the topic, we didn't announce the speaker, and we got 75 registration. So people were so confident कि ये अच्छा ही होगा करके. And up till now almost 200 registration is done. Now you can go to the website and look at the speaker, look at the content. I think very beautifully designed, and so much efforts being taken by Sanjay Bhai in deciding topic, faculties, and I'm sure probably if the turnaround is more, we'll shift it to the first floor in Yogi. That's what we are exploring. Because already हम almost 200 पे पहुंच गए, and the down hall capacity is some 400 and odd. So look at that. And I think that's again going to be a Sir, registration stop करना पड़ेगा. And sub-regional conference at Pune Pimpri. So usually sub-regional conferences also happens very far. This time we have kept at a very convenient place in Pune, so that even Mumbai guys, they want to go for even networking, attending sub-regional conferences. So abhi aisa hai कि Pune we can go and come back also, and even if we stay one night, we don't have to spend much time on travel. So on 14th and 15th of June, there's a sub-regional happening at Pune. So please see that also. We have announced the date, and again, fantastic topic. For example, GST Avinash Poddar is coming. Similarly, I'm not giving the other name, but all good speakers are coming in that 2 days sub-regional conference. So please look at that. Thank you so much. We took extra time actually. Than what we thought. Thank you, sir. Chalo, come on, fast.
तीन जन बैठ जाओ फिर अकेला कैसे बैठेंगे? नहीं नहीं अकेला नहीं आप भी बैठो मैम का बोले दिलीप जी तो बैठ ही जाएंगे स्पीकर हैं आप ही आ जाओ उस तरफ 4 जन तो बैठे आई थिंक कुछ लोग बैठ जाते हैं तो सब आ जाएंगे ठीक से दिनेश भाई आप भी बैठ जाओ कुछ लोग तो बैठेंगे तो अच्छा कुछ लोग पीछे आ जाइए ना एक हाफ सर्कल सर बैठो ना एक सीट ले लो मैडम बैठ जाओ कुछ लोग बैठ जाएंगे तो आ जाएंगे नितीश एकदम पीछे जा सब लोग आ हाँ, सब आ जाएंगे अभी आ जाएंगे थोड़ा आगे पीछे से वो बेचारा वो पीछे हाइट नहीं होना चाहिए। हाँ एक्चुअली नहीं दिख रहे हैं उनके आगे सर आप आगे थे शाम जी आप जरा नहीं चेंजेस आगे आगे सर सब आने चाहिए देख ले सबकी शक्ल दिख रही है ना अब तेज नवनाथ भी आ रहा है ना येत आहे मग ते मला माहिती होतं ऊपर करके ले कैमरा थोड़ा सा ऐसे ऊपर करके ले तो आएगा थैंक यू थैंक यू एवरीबॉडी ऑडिट एविडेंस बन गया हाँ फॉर्चुनेटली आज ही रेरा चेयरपर्सन से उधर केतन भाई आज ही मिल के आया हूँ और अपना रिप्रेजेंटेशन पर मिलके अपना ऐड करना लेकिन वो आप एक दिन आराम से आइए बैठते हैं हाँ ठीक है बहुत बढ़िया सर आप लोग का इस तरह से हम लोग को जो सेशन मिलेगा तो हम यहाँ आके एक्सपायर हो गए उल्टा है हम लोग आपको काम देने आए थे असाइनमेंट देने आए थे वो असाइनमेंट दे दिया काम हो गया नहीं जब आप देखो हम लोग का काम है प्लेटफॉर्म देना उसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो और इंकरेजमेंट संजय भाई आप हमको बैडमिंटन कोर्ट में मिल रहे हैं अभी वापस मिलेंगे सर यस इसीलिए आप दूसरी साइड में देख रहे हैं वापस आता नहीं है यार थोड़ा 5-10 मिनट करके हम निकल 5-10 मिनट करके हाँ घर का बुलावा आने लग गया देखो हमारे कन्वेनर सब नहीं सब We'll wind up in 5-10 minutes. Okay. हाँ अच्छा now there will be no question answer right only one way traffic नहीं no question जो भी क्वेश्चन है ना वो डिस्कस कर बाद में ग्रुप में डाल के आप पूछे okay let me share my some of the thoughts which are I think is important for all of us right so far table A भी almost completed withdrawal limits discussed जो बैंक अकाउंट है वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेनी प्रोजेक्ट्स रेरा के साइड पर रेरा डेजिग्नेट अकाउंट होता है और हमें बिल्डर क्या दिया वही डाल देते हैं उसमें एंड नो कमेंट्स अबाउट व्हाट रियली रेरा अकाउंट एंड व्हाट वी आर कमेंटिंग प्लीज कवर इन द टेबल जी गिव योर व्हाटएवर रियल थिंग्स यू हैव सीन एंड व्हाट रेरा डेजिग्नेट अकाउंट ऑन द रेरा वेबसाइट सेज वन थिंग सेकेंडली एट टाइम्स यू विल फाइंड रेरा डेजिग्नेट में भी थोड़े ट्रांजेक्शन किए उसके दूसरे अकाउंट में भी उन्होंने किए देन व्हाट irrespective of different opinions what I do is यदि पैसा प्रोजेक्ट के अकाउंट में आया है चाहे वो किधर से भी आया है एलोटीज का पैसा ए अकाउंट में आया कि बी में आया तो वी शुड कवर एंड कमेंट ऑन दैट आइदर यू गिव टेबल सपोज उसका टेबल कौन सा है डी है ना ई है ई को रिपीट कर दो उस टेबल को बैंक एक्स बैंक वाई एंड गिव टेबल जी कमेंट्स because xyz explained to us instead of some of the RERA designated payments they have received in other accounts also which we have put in different table or you give one single different columns add and then accordingly amount may be reflected or irrespective consider there are more than one or two or more accounts then it is not possible at times to give all those then at least sum up of debits or credits deposits or withdrawal
you may comment in table G, and that is where we can fulfill our obligations. Now come to table F. F is means of finance. Means of finance is also critical area. There is nothing nowhere. They have just put 4 items: own fund, secured funds, unsecured, and then collected from LOTs. These are 4 heads are given. Maybe something else, but there is no column. Do whatever you need to do, add wherever you need to add, whatever you think as a chartered accountant is essential to add, give your comments in table G. That is how you can explain and safeguard your professional obligations. Coming to the fund utilization, 9 minutes. फंड यूटिलाइजेशन, पूरे साल में जितना पैसा कलेक्ट किया वो 9 मिनट में कैसा खर्चा कर सकते हैं, राइट, और कैसे उसको कंप्लायंस के दायरे में रखे. Section table order 56, 27th June 24 is very important, right? Any project from 1st July 24, if they are getting registered, they are bound to have 3 RERA designate specific account. Suppose XY Limited company is a promoter and they want to open RERA accounts in their ABC project. Then they have to have XYZ Limited, first name of the project company, and then designated collection bank account, and then project ABC. This is the specific name nomenclature to be. Bank is also knowing, even if they are not knowing because of newness of this, you have to go with the circular and tell them to open these 3 sets of accounts in one single branch. You cannot open 3 accounts in different branches. You have to open in one bank. Now, there can be more than one promoter, and they are having the revenue sharing or area sharing, irrespective of whatever is there. And RERA Act says 70% to be used for the project and can be withdrawn after compliance under section 4 to LD. This is the provision. Now, to have this compliance, what you need to do is, this circular says you have to have one single master account. Instead of the collection account for different promoters, you should have XYZ Limited, then designated master bank account and ABC. This is the one additional account to be opened wherein all the funds which are collected from the project to be deposited, and then out of that whatever is the contractual obligations of the promoters, उसने तय किया कि हमको 30% मिलेगा, किसी को 10% मिलेगा, या इतना ही है मान लो फॉर एग्जांपल, then out of that they will also have 3 sets of account. That fund will be in advance. जो auto sweep mechanism in the bank will be, you have to sign and give to the bank when the account is opened, and those contractual obligations be made through transfer of appropriate percentage to those respective accounts, and then out of those 3 accounts, 70%, 30% obligations to be met. Collection is 100%, no withdrawal is allowed out of collections, and then the designate account, RERA, separate bank account is now, earlier it was called RERA designate account. Now they are calling it designated separate bank account. This account, out of that 70%, amount may be project related, can be withdrawn directly, and or it can be transferred to your normal transaction bank account where you are using by way of different checks or RTGS or NEFT. This is the normal how to manage the fund of the project. Now question is 70% team builder, team promoter, और जैसा sometime back somebody said कि वो बोलता बेचेगा नहीं, थोड़े देर के बाद निमेश भाई आगे कि हमारा प्रमोटर बोलता है हमको अब बेचने का जरूरत है. These things are the extra added hook you have to handle based on your facts, and you have to appropriately, if you are disclosed they are not going to sell, then obviously things have to be altered. There are change options if required, says so, to comply with and get the approval from the authority with the appropriate changes, because in such cases where your promoter has said that they are not going to sell their products,
they are going to keep it for their own use or whatever purpose till OC. Then they were not supposed to open their 3 bank accounts. Now they are intending to do that. Then what? Then they have to open those 3 accounts and update their portals and appropriately all those compliances to be done. Right. अभी खर्चा करने का है. Suppose there are bank loans and all those compliances, how to meet. Tharsai report to be uploaded one, and then disclosure to be made uploaded having related to the project or units, apartments, whatever is there to be disclosed. And those, suppose 10 crores rupees loan has been taken by the promoter against the particular thing, is to be appropriately disclosed. Then वो 10 crore मेरे दिमाग में आज तक एडजस्ट नहीं होता है. जिस प्रोजेक्ट को सेल, mortgage, gift, any kind of thing are treated as disposal of those assets. लेकिन जब लोन के लिए आज तक रेरा क्यों नहीं स्पेसिफिक प्रोविजन लेके आता है? यदि किसी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का और उसने 50 करोड़ लोन बैंक से उठाता है और उसके ऊपर अभी कोई कंडीशन नहीं है कि वो रुपया किधर डालेगा, it means it's their choice to use anywhere. This is the gray area for me. Maybe I may be different in my opinion. जब भी हम लोगों को अभी केतन भाई ने भी बताया और मैं खुद ऑलरेडी ये सब चीजें करते रहता हूँ. महारेरा रिप्रेजेंटेशन के लिए आज गया था मैं. प्लस आवर रिप्रेजेंटेशन रेरा बॉडी शुड बी एग्जिस्टिंग. उसके लिए पिछले में भी 3-4 आप गए थे एक बार मेरे साथ स्टार्टिंग. We had gone 5 person to represent WRC and requested them to have your advisory body where you are taking decisions and coming out with circulars or any such kind of things which you are implementing. In fact, there are 1, 2, 3. So 3 का सारा base है. And then form 5 is again yearly, everything covers. So these people are not considered. Their opinions are not being taken. And you are hiring chartered accountants is different thing. Big 4 को रख लो कोई बात नहीं. It does not mean कि उनके करने से हमारा हिंदुस्तान की गाड़ी चलेगी. Compliances तो हमको सबको करना पड़ता है. And our ground level knowledge is much more than what they have. They may be rich in their technology. They may be rich in their rich and complex opinions. But when it comes about small things, they even don't consider. जैसे आप फॉर्मेट आप देख रहे हो, इट्स नॉट इजी टू मेक. हमको बोलता बनाने तो शायद नहीं बनता मेरे से, बट बनने के बाद इसमें 10 कमियां हम निकालने के लायक है. ये कमियां उनको दिखती तो ये कमियां वो भी निकाल सकते थे, ये नहीं दिखेगी उनको, बिकॉज ग्राउंड वर्क वी आर डूइंग. तो दैट इज व्हाई वी वांटेड टू जस्टिफाई. और सर, if our WRC team is really proactive to take us forward, not we as a charter, but we as a RERA study group, take it forward, and then we will contribute there. We are not going to tell them to give work to us. No, we will contribute in such a way that they will expect कि yes, इनका होने से हमको फायदा होगा. Everywhere, whenever your intent comes from contribution, it will impact substantially. तो आप लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि या तो इन्होंने कौन सा ग्रुप बनाया, मेरे को भी आप ऐड कर लो, एंड उसमें कुछ चीजों में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. FAQs जो लास्ट ईयर नहीं किया हम लोग कर सकते हैं, इस मंथ से भी कर सकते हैं, या आप थोड़ा पहले से बताओ. वी कैन फिक्स अप टाइम की समझो जर्नल इज पब्लिश सपोज ऑन 31st सपोज, एंड लास्ट डेट टू गिव देम द क्वेश्चन आंसर बाय 25th. तो फॉर देम इज द लास्ट डेट कट ऑफ. उसके बाद उनको भी कुछ करना रहता है, सेटिंग वगैरह. फॉर अस वी कैन कीप 22 और 28. तो इस होने तक यदि हम में से किसी को एक क्वेश्चन FAQ बनता है तो यू कैन गिव, किसी को 4 बनता है तो दे सकते हैं. एंड वी कैन मेक इट इन अ वे दैट 15-20 FAQs हम उसमें डालते हैं, तो इट विल अल्टीमेटली बी हेल्पिंग people those who are connected with the real estate, so amongst you also and others also, so they will see the value which study group is contributing. And then strength 44,000 में 70 को ज्यादा इसीलिए बोल रहे कि पहले इतने भी नहीं थे. एंड सब्सटेंशियली आज का टॉपिक फॉर्म 3 नहीं होता और लिटिगेशन रखे होते तो मुश्किल से 10 लोग भी नहीं आते. कुछ लोग बाय
प्रोफेशन बहुत पैशनेट है रियल एस्टेट के नॉलेज के लिए, वो आते हैं हमेशा। लेकिन बाकी लोगों को इतने, मैं इसको रूडली बोलूं, मैं सेल्फिश हूँ आप, कि आपका टॉपिक नहीं तो क्यों जाऊं, मेरे को क्या करना है। इसको सेल्फिश बोलना गलत नहीं है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि रियल प्रैक्टिस आपकी लिटिगेशन है, यू माइंड इट। यदि ये सारी चीजें लिटिगेशन में भी रिफ्लेक्ट होती हैं, व्हेन आई रिप्रेजेंट एलओटीज और बिल्डर्स केस टेकिंग व्हाटएवर, तो उसमें मैं ये मसाले को यूज करता हूँ, पैराग्राफ को रिप्रोड्यूस करता हूँ। दिस सर्कुलर सेज एक्स, दिस promoter has not done this and therefore my right should be protected as a LOT. आप समझ रहे हो? So many things. मैं कई बार इसके डाउनलोड्स करता हूँ, व्यूज में जाते हैं तो हम लोग को अपडेट्स रहता है, एंड मेनी गुड बिल्डर्स जिसके बारे में 20 प्रमोटर बोले आप जाके चेक करो, एक एक प्रमोटर के 200 प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, और आप जाके सरप्राइज करोगे क्या बात है, मतलब अपडेट है उनका, लेकिन टू द अप टू मार्क नहीं है। इट मीन्स व्हाट, आपकी जरूरत है उनको, क्योंकि आप कमिटेड हो और स्टडी ग्रुप में नॉलेज अपडेट कर रहे हो, और इस अपडेट नॉलेज के साथ यदि उसको वैल्यू एडिशन करते हो वहां पे, तो आपकी जरूरत है उनको, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी ग्रेडिंग खराब हो। इफ यू लुक एट RERA's one circular which says about the grading, grading is what, आप बैंकिंग के अकाउंट में आप जाते हो तो रेटिंग्स है, रेटिंग आपकी पुअर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। रेरा की ग्रेडिंग पुअर होगी तो उसको बैंक जो लोन देने वाले होंगे, रेट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा पक्का। बायर का रेशियो उसमें एक्सपेक्ट करेगा कि इसमें हम फंसे नहीं, क्योंकि एक तो ऐसे डर लगता है कि इस प्रोजेक्ट में हम फंस जाएंगे, और पुअर रेटिंग है तो उसकी सेलेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा, अल्टीमेटली उसको रेट कम करना पड़ेगा। तो आप उसकी रेट बढ़ाने में हेल्प कैसे करोगे? रेटिंग ठीक करने में। रेटिंग ठीक करने के लिए होलिस्टिक कंप्लायंस करोगे, उनको गाइडेंस दोगे, तो आपकी वैल्यू आपको बनाना आना चाहिए, ना कि आपकी वैल्यू को डाउन कर दो, 5,000 में हम सर्टिफिकेट साइन करेंगे दूसरे से, वो आपको दे देंगे 5 काम। मैं तो बोलता हूँ 10 काम आपको और हम भी दिशा देते हैं, लेकिन मत लो, ले ही मत, पट के साथ काम करो, नॉलेज जितना उतना ही काम करो, वैल्यू बढ़ती है आपकी। मैंने सब काम बंद कर दिया, और बहुत टाइम मिलता है बैडमिंटन खेलने चला जाता हूँ, और उससे ज्यादा टाइम मिलता है तो वाइफ को लेके घूमने चला जाता हूँ। सब काम ऑनलाइन है, कोई भी काम आपको फिजिकल, सिर्फ WRC का रेरा स्टडी ग्रुप पर्सनल फिजिकल है, रेरा के सारे काम ऑनलाइन है, आपको कभी आपको जरूरत नहीं वहां जाने का। कब जाना पड़ता है? जब आपका काम नहीं हो रहा है, तो डेवलप करने के लिए। क्यों नहीं हो रहा है? आपको समझने या उसको समझाने, बस तो ही काम है। इधर आप समझ जाओ या उसको समझा लो। इसके 2 सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। अपने ग्रुप में जो लोग PRO वर्क में ज्यादा आना जाने में बहुत विश्वास करते हैं, उनसे टाई अप कर लो, मेरे काम आप ही संभाल लो उधर का। आप अपनी कमाई करते हो 1 रुपया, उसमें से 10 पैसे का खर्चा हुआ, इतना ही हुआ ना। बट आप एक जो काम कर रहे हो 5, उसको 10-15 काम तक कर पाओगे एफिशिएंसी बढ़ा के। इंस्टेड ऑफ सारे काम खुद क्यों करने का है? समय आ गया, यू शुड स्पेशलाइज योरसेल्फ। हर रेरा में जैसे आई स्पेशलिस्ट है, रेटिना स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशल, अभी सर अच्छा हाँ 1 मिनट ऊपर हो गए, ओके अच्छा ओके। एनीवे माय टॉपिक्स आर related with some of the connected, some other talks which makes you alive in interesting, making it more interested. And because I think we have taken 5 minutes more. Closing touch. Yes. Thank you for your listening and contribution. First of all, thank you all members. Like today's attendance is wonderful. I hope in the second session also there is lots of attendance. We have already decided the dates. We will share it in the group. The second session will be taken by our core group member Prasanna. 16th May. On 16th May for GST on specifically on land development rights and how a particular land development liability GST will be applicable. So and the third session will be on the extension of the project. That will be in the month of 13 June. We will have. So I will. We will share. But आप लोग अगर बॉम्बे में हो तो
attend all the lectures, all the sessions. जितने आओगे और जितने क्वेरीज लाओगे उतना ज्यादा आपके लिए भी अच्छा है, बाकी सबके लिए भी अच्छा है. So that for all the members. And second thing, today's our group mentor Dilip Agarwal sir has given a wonderful session. He has provided all the insights of the Form 3 very detailedly, and he has told us how to practice also. So we should not only think of the Form 3, we should also check the other perspective from the allottee's point of view also, as well as from the builder's point of view, and try to make the Form 3 more informative. So wherever you are going into while issuing Form 3, discuss if there are more issues, or you can have a random cross check with any of the core group members or from our own RERA study group members also. We will get more insights while issuing Form 3. So it will be very group. We will have a more intensive knowledge about the Form 3. And I'm very grateful, sir. You have taken a very wonderful session, and we hope there will be more sessions coming on from you. And thank you from the whole study group members. Thank you. Thank you. It's a privilege to be with us. अच्छा, एक हम लोग का अपना ग्रुप फोटो तो ले लेते हैं, वो लोग कब देंगे क्या करेंगे मालूम नहीं. इधर आ जाइए. Only 1-2 minutes, हाँ, हम लोग अपना